Good morning, students. So today we are going to discuss about electric flux. So electric flux का मतलब क्या है? Flux is a term that has been derived from the Latin word fluxus. Fluxus. What does it mean? It means flowing. Something is flowing there, or even it appear to be flowing. Okay, so in case of English, these two letters have been dropped and now it becomes as flux. Okay, तो जो लैटिन में फ्लक्सस बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्लक्स. इसका मतलब क्या है? समथिंग इज फ्लोइंग और समथिंग appears to be flowing. Well, now this flux has been derived from fluid mechanics. ये जो वर्ड फ्लक्स किस में यूज किया जाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है. सो लेट अस एट फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन फ्लूइड मैकेनिक्स. thereafter we will discuss what is electric flux. Suppose this is a tube of uniform cross section. Well, now this side is surface 1 and that side is surface 2. तो ये हमने एक ट्यूब ले लिया एंड ऑन बोथ साइड्स दिस सरफेस एरिया रिमेन्स सेम. सपोज लेफ्ट साइड का सरफेस एरिया S, तो राइट साइड का कितना होगा? वही S होगा. वेल, नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? इसमें क्या जा रहा है? नाउ लिक्विड इज पासिंग थ्रू दिस ट्यूब. इज दैट क्लियर? लिक्विड इज पासिंग थ्रू दिस ट्यूब. ओके, नाउ सपोज liquid takes time t to move from one end to the other end of this tube. Now what is about its length? That I am saying that the length of the tube is d. तो ट्यूब का लेंथ कितना माना हमने? d माना. और लेफ्ट से राइट तक जाने के लिए लिक्विड को कितना टाइम चाहिए? t टाइम चाहिए. Well, now I could see that something is called rate of flow of liquid. So what does it mean by rate of flow of liquid? This is the amount of liquid flowing per unit time. Amount of liquid flowing per unit time. इसको हम बोलते हैं rate of flow of liquid. Well, now this rate of flow of liquid can also be defined as, amount of liquid means that is the volume of liquid flowing per time. तो जहां पे हम अमाउंट ऑफ लिक्विड यूज करते थे वहां पे हम वॉल्यूम ले सकते हैं. किसका वॉल्यूम? जितना लिक्विड वहां पे फ्लो किया होता है. वेल, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ वी नो दैट दिस ट्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस ट्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सो दैट इज हाउ volume of this tube is nothing but its surface area multiplied with the length. So that is how the volume of liquid can also be taken as the length of the tube multiplied with the surface area, well, divided by time. Okay, so this is called the rate of flow of liquid. तो जिसे हम rate of flow of liquid बोलते हैं, that is otherwise called as the liquid flux. This is called the liquid flux or fluid flux. तो fluid flux या फिर liquid flux का मतलब क्या होता है? This is the amount of liquid flowing per unit time, otherwise called as the rate of flow of liquid. Okay, now what is this d? This is the distance covered by the liquid in time t. So distance covered per time along a straight line is nothing but the velocity of liquid. So this d by t becomes the velocity of liquid. And what is S? S is nothing but the surface area of the tube. S क्या होता है? ये ट्यूब का surface area लिया जाता है. So that is how this can be taken as surface area A. Now don't be astonished that I have put the arrow mark over the surface area. Why? Because
this surface area is now treated as a vector quantity. Well, मान लो कि ये एक surface है, okay? So what about its magnitude? अगर surface area को हम vector मानते हैं तो इसका टू पार्ट्स होता है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसका डायरेक्शन होता है. सो व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व. देन व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वेल, डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा, लाइक दिस. नाउ यू कुड सी इफ दिस इज द सरफेस, व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इफ दिस इज द सरफेस, व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो this surface area is a vector quantity whose direction is always perpendicular to the surface. That is how you could say that this is the dot product between velocity vector and surface area vector. So that is how, as because it is the dot product, so the result is a scalar quantity. That means the liquid flux is a scalar quantity. Well, so this is all about the liquid flux whenever liquid passes through uniform cross-sectional tube. Okay. Now what will happen if this uniform cross-sectional tube is replaced by non-uniform cross-sectional tube? You could see. Suppose this is a tube of non-uniform cross-section. तो यहां पे क्या होता है? धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है. वेल, while moving from left to right. Suppose here also the distance is d. I mean to say the length of the tube is d, and of course the liquid is passing from left to right. इस तरह से पास किया होता है. Well, now how to calculate the liquid flux in this case? Okay, one important trick is there. Remember, suppose I write z equals f multiplied with x. Suppose in mathematics, one important trick I am telling you that z is the multiplication of f and x. Suppose f is a constant, x is also constant. Then to get the value of z, we can directly multiply f with x. But now think of that, f is a function of x. Well, then how to get the value of z? Remember, in case of multiplication, if this f is a function of the variable x, then we have to integrate it. तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम में अगर वेरिएबल है तो क्या किया जाता है? वहां पे इंटीग्रेशन किया जाता है. उसी हिसाब से इफ z इक्वल्स f डिवाइडेड बाय x, अगर डिवीजन है z इक्वल्स f डिवाइडेड बाय x, मान लो कि इस तरह का है. ओके, नाउ रिमेंबर इफ f इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट, देन वी कैन डायरेक्टली डिवाइड इट टू गेट द वैल्यू ऑफ z. बट if f is a function, then what we have to do? We have to take the differentiation. बस इतना ही तो है. Well, तो हमेशा ये याद रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे वेरिएबल है देन वी हैव टू इंटीग्रेट, अगर डिवीजन के टाइम में वेरिएबल है देन वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन. वेल, सो नाउ वी केम टू नो दैट आज बिकॉज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब, तो इसमें एरिया क्या होता है? वैरी कर रहा है, तो वेरिएबल है. और वेरिएबल के टाइम में यहाँ पे किस तरह का अलजेब्रा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन में अगर वेरिएबल रुक गया, सो हाउ टू गेट द रिजल्ट? बाय इंटीग्रेटिंग इट. इज दैट क्लियर? सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? सपोज वी आर टेकिंग ए वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ इट. मान लो कि छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लिया. नाउ दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन हैज एरिया ds. ठीक है, सो व्हाट विल बी द फ्लक्स नाउ? द फ्लक्स ऑफ लिक्विड कैन बी टेकन as
velocity of liquid dot, अगर ये स्मॉल एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फ्लक्स भी कम हो जाएगा. So that is how in place of taking phi we can take it as d phi. So what will be d phi? It is v dot ds. कितना बनेगा? v dot ds बनेगा. But you, in order to calculate the total flux, क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के टाइम में इंटीग्रेशन करेंगे. So that is how flux of liquid, the total flux will be integration over v dot ds. Is that clear? Integration over v dot ds. तो मान लो सपोज एक सरफेस इस तरह का है और ये क्लोज किया हुआ है. Then while taking the flux we write here as closed integration. Okay, so bounded by the path. So the surface being bounded by the path. Well, so flux is closed integration v dot ds. Okay, तो once again what do you mean by this closed integration? अगर ये surface कुछ space को bound करके रख रहा है, so that will be called the closed integration or closed surface. Well, now this is all about the fluid flux. Now how is it related to electric flux? Okay, so just like the fluid streamlines, here what we are drawing the electric field lines. Okay, तो जहां पे ये फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन था, these are being replaced by the electric field lines. Okay, now I could see that here is the representation of electric field. Okay, तो जहां पे फ्लूइड पे हम वेलोसिटी यूज करते थे, now that is being replaced by electric field intensity. So that is how in case of uniform cross section, what will be the electric flux? The electric flux will be the dot product of electric field intensity and surface area vector. Well, तो जहां पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा वहां पे हम इसे यूज करेंगे. Well, जहां पे सरफेस एरिया फिक्स्ड है, अगर सरफेस एरिया हर जगह पे डायरेक्शन वेरी किया होता है, मतलब क्या? Now suppose this is the surface. Well, now the surface is vertical. Every point will have the area vector direction in horizontal direction. Okay, always perpendicular to the surface. Now suppose this surface is represented in somehow a different manner like this. तो अगर मैं यहाँ का area vector निकालूं, so what will be the direction? Perpendicular to the surface like this. अगर यहाँ का डायरेक्शन निकालूं, सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इधर का निकालूं, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो यू कुड नो दैट एवरीवेयर द डायरेक्शन varies. So wherever the direction varies, the surface area will also vary, and whenever it varies we have to take the integration. तो इस टाइम से हम अब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे by integrating, so if the surface area varies, then the electric flux can be given by integration. तो जहां पे वेलोसिटी वहां पे रिप्लेस करेंगे किसको? फील्ड इंटेंसिटी को. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एलिमेंटरी एरिया वेक्टर. वेल, कभी कभी ये एरिया वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, like n cap ds. Okay, what is n cap? Is the unit vector of this ds vector. Well, so that is how this is all about electric flux. Okay, so remember once again, while solving the numerical questions, suppose the electric field intensity is given like this, is 2I cap plus 3J cap. Okay, so now you could tell me the SI unit of electric field intensity. याद है? What is that? Newton per coulomb. Okay, now you tell me whether this electric field intensity is a constant or a variable. Yes, of course it is a constant. Why? Because 2 is a constant, 3 is also a constant. So this total is a constant. And while calculating flux with this constant electric field, what we have to do?
we have to directly take the dot product between field intensity and area vector. But if it is not a constant, for example, field intensity is given by 2x I cap plus 3x square j cap. Well, then what we have to do? We could say that as because here contains x, so this is in variable form. Okay, so in case of variable form, what we have to do while calculating the flux, we have to take the integration there. Okay, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे ds है तो उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? सो दैट विल बी इंटीग्रेशन E dot ds. Okay, well, so now let us come to the problems regarding this electric flux. So let us solve some of the numerical questions, important numerical questions of this S.C. Verma. We can say as S.C. Verma, the book, as a Bible of physics as far as all the entrance examinations are concerned. We know that in 25th December, the Messiah, जिसे हम बोलते हैं जेसस क्राइस्ट, वो कब पैदा हुए थे? 25th December को. Okay, and Messiah means the savior. Okay, savior of earth. So Messiah was born in 25th December. But we also know that on the same day of 25th December, another Messiah of physics was born. He was none other than Sir Isaac Newton. Well, तो एक तो मसीहा जेसस क्राइस्ट born on 25th December, और फिजिक्स में मसीहा who is the savior of physics, he was none other than Sir Isaac Newton, who was also born on 25th December. Okay, now Jesus Christ wrote Bible, and Sir Isaac Newton also wrote Bible of physics, that is Principia Mathematica Philosophia Naturalis, that means natural philosophy of mathematics. Well, तो जैसे कि सर आइजैक न्यूटन का होल फिजिक्स में एक बाइबल है, that is Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Similarly, for all the entrance appearing students, this S.C. Verma, according to my knowledge, well, it's just like a Bible. Okay, so we are going to solve the question of this Bible. You know, the question says that, of course, this is under the Gauss law chapter, exercise question number 1. The electric field in a region is given by vector E equals (3 upon 5 E naught I cap plus 4 upon 5 E naught J cap. Well, and the value of E naught is also given. E naught is your 2 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. It is saying that find the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane. So the surface area magnitude has been given to you, that is 0.2 meter square, and the surface area is parallel to YZ plane. Now let us discuss how the surface area vector is to be recognized. Now x, y, z axis. Well, the simple thing of recognizing x, y, z axis is just to look at one corner. Okay, one side is x, the other side is y, and downwards is z. Anyway, so suppose here is the plane. Okay, plane कहाँ पे है? y-x plane पे है. Okay, surface कहाँ पे है? xy plane पे है. तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस दिशा पे होगा?
पैरेलल टू z एक्सिस होगा। कैसे? बिकॉज वी नो दैट z एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग x एंड y। वेल, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? k कैप। इज दैट क्लियर? वेल, सिमिलरली अगर the surface is plane, the surface is present on zx plane, अगर surface zx plane में है, so what about the area vector? The area vector will be perpendicular to the surface. That means this area vector is now parallel to y axis. Okay, अगर ये parallel to y axis है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? j कैप। जैसे कि z एक्सिस में क्या बना था? k cap. Well, now suppose the surface is parallel to, well, yz plane. Okay, then the area vector will be along which direction? X axis. So what will be its unit vector? I cap. Well, so that is how. अगर yx plane में है तो एरिया वेक्टर k cap, अगर zx प्लेन में है then j cap, अगर yz प्लेन पे सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर i कैप होगा। क्लियर? ओके, सो दैट इज हाउ। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द सरफेस इज ऑन yz प्लेन। सरफेस इज ऑन yz प्लेन। यस, तो व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर नाउ? इफ इट इज yz प्लेन तो याद है ना, तो किस डायरेक्शन पे होगा? x डायरेक्शन पे। तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? i कैप। सो दिस विल बी 0.2 i कैप। वेल, नाउ flux, electric flux will be, I could say that all are constants. So if they are constants, we can directly take the dot product. तो dot product लेंगे, E dot S होगा। So that will be, 3/5 I cap plus 4/5 j cap whole of E naught whole dot क्या होगा? S, that is 0.2 I cap। फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के समय हमें ये जरूर मार्क करना होगा whether all the parameters given are in the same system of unit or not. Okay, just like the area is in SI, the field intensity is also in SI. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता then our first duty is it to convert it to SI form. Okay, so that is how here all are in the same system of unit, that is SI, so no need of conversion is there. Well, so now I proceed. तो what is I dot I? I dot I क्या होता है? 1 होता है। What is I dot J? I dot J क्या होता है? 0 होता है। So that is how only we have to take I dot I, जैसे कि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। So that is how 3/5 multiplied with 0.2. So 3/5 multiplied with 0.2, that is 1/5. Then I dot I 1, then E 0, or even E naught. That is 3/25. What is our E naught? E naught is nothing but 2 10 to the power 3. Well, अब फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा? दिस इज फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम एंड सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर. सो दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. Well, so now if you calculate, it becomes 6/25. That is 6/25. तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कैसे करेंगे इसको? So 6 multiplied with 4 and 25 multiplied with 4, तो कितना बनेगा? 24/100, then 10 to the power 3. So this will be 0.24 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. Is that clear? Well, so on the next class we are going to discuss about Gauss law. Nice.